Dear students, this is me, Dr. SHIKHA Sharma, lecturer in English at Government Girls College, B.A. Students, in this video, I am going to talk about John Donne's poem, Death Be Not Proud. Okay? Death Be Not Proud. In this poem, actually it is a sonnet, okay? It's divided into two parts, octave and sestet. In this sonnet, John Donne talks about death. Okay, he personifies death. What is personification? Actually, he personifies death. Personification means when an inanimate object is treated as an animate object. It is called personification. Death is personified here. Okay, so he directly talks to he directly addresses death, and it is just like he talks to death. Okay, so he personified death. He addresses death as death is if it were a person. So what is the structure of this poem? This poem is divided into two parts. This sonnet is divided into two parts, octave and sestet. The octave proves that death is neither dreadful nor mighty. Okay, the sestet brings the argument to a personal level and regards death as a slave. Okay, so now let's start the poem. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. In this poem, actually, the poet talks about death and says that death should not feel proud over the idea that it is powerful and horrible. Some people call death to be mighty and scary, but death is not so. Death is neither strong nor terrible. Death thinks that it has killed many people, but it is not true. Death can destroy only their bodies, but it has no power over their souls. The soul is immortal, death is vast and significant. Actually, इस poem में जो death को उसने personify किया है, okay, और वो कहता है कि death को यहाँ डेथ थिंक्स दैट डेथ मृत्यु अपने आप को समझती है कि वो बहुत पावरफुल है और भयानक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. जो जॉन डन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है. डेथ इज़ नाइदर स्कैरी नोर माइटी. ना तो वो डरावनी है, भयानक है, और नहीं शक्तिशाली है. एक्चुअली इट इज़ अ स्लेव. ये खुद ही कुछ चीज़ों की गुलाम है. ओके, so he says that death, be not proud. Death, oh death, you should not feel proud on yourself. तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. Death, be not proud. Don't feel proud. तुम अपने ऊपर घमंड मत करो. Though some have called thee. Thee means you. Some have called thee. Some people think about you, or some people call you mighty and dreadful. Mighty means strong, शक्तिशाली, and dreadful, fearful, awful, scary, भयानक. Some people think that you are strong and terrible. For thou means you. For, but thou art not so. लेकिन तुम ऐसे नहीं हो. You are neither powerful nor scary. ना तो तुम powerful हो और ना ही भयानक हो. For those whom thou thinkst thou dost overthrow. For those, उन लोगों के लिए, whom, जिनको, thou thinkst, जिनके बारे में thou, तुम, thinkst, सोचती हो, जिन लोगों के बारे में तुम ऐसा सोचती हो कि thou, तुम, you, thou means you, dost, does, overthrow, killed, though you have killed, जिन लोगों के बारे में, the people about whom you think that you have killed them, जिन लोगों के बारे में तुम सोचती हो कि तुमने उन्हें मार दिया है. फॉर दोज, वो लोग, whom, जिनके बारे में, thou thinkst, तुम सोचती हो, thou dost overthrow, you have killed, कि तुम उन्हें मार चुकी हो. Die not, poor death, oh poor death, die not, they are not dead, वो मरे नहीं हैं, तुमने उन्हें नहीं मारा है. ओके, और yet canst thou kill me. can't thou, you, kill me, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो.
Okay, the poet says that you think that you have killed, murdered man, you have killed many people, you have destroyed many people. तुमने काफ़ी लोगों को destroy किया है, मार चुकी हो. But it is not true. लेकिन ऐसा नहीं है. Neither you killed them, nor you can kill me. ना तो तुमने उन्हें मारा है और ना ही तुम मुझे मार सकती हो. Okay. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow. From rest and sleep, but which but thy pictures be, rest and sleep, आराम करना और सोना, thy pictures be, ये तुम्हारी ही picture, this is your form, okay. Rest and sleep is your another form, तुम्हारी ही एक रूप है, तुम्हारा ही एक रूप है. सोना या आराम करना भी तुम्हारा ही एक रूप है. मच प्लेजर, जिसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है. देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो. ओके, जब सोने में या आराम करने में ही इतना प्लेजर मिलता है तो डाइंग, देन द डाइंग मस्ट बी इवन मोर प्लीजेंट देन रेस्टिंग एंड स्लीपर. तो मरना तो आराम करना या सोने से भी ज़्यादा प्लीजेंट होगा. ओके, and soonest are best men with thee do go. And soonest and very soon, और इसीलिए शायद बहुत जल्द, आर बेस्ट मैन, नोबल मैन, गुड पर्सन, जो अच्छे लोग होते हैं, विद दी डू गो, वो तुम्हारे साथ चले जाते हैं. यू जस्ट टेक देम, तुम उन्हें लेकर हम दूर चली जाती हो. क्योंकि रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, आराम करना और सोना भी तुम्हारा ही एक रूप है. एंड जब सोने या आराम करने में इतना आनंद मिलता है तो मरने में, डाइंग, मरना तो उससे भी ज़्यादा प्लीजेंट है. इसीलिए शायद जो नोबल मैन, अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं, उन्हें तुम बहुत जल्द लेकर चली जाती हो या तुम उन्हें बहुत जल्द मृत्यु की नींद में सुला देती हो. Rest of their bones, okay, and soonest are best men with thee do go, और वो उन्हें तुम अपनी मृत्यु की निद्रा में सुला देती हूँ. Raised of their bones and soul's delivery, raised of their bones, okay, just to raise their bones, उनके शरीर को आराम देने के लिए शायद तुम उन्हें हमेशा के लिए नोबल जो पर्सन है उन्हें ले जाती हो. एंड soul's delivery, and just to free their soul from their body, और उनकी जो आत्मा है उनको उनके शरीर से अलग करके स्वतंत्र कर देती हो. ओके, आत्मा तो उनकी स्वतंत्र हो जाती है और जो उनका शरीर है वो आराम करता है और तुम बहुत जल्द उन्हें यहाँ से ले जाती हो. रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, ताकि उनकी बोन्स को, उनके शरीर को आराम मिल सके और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके. The poet says that death should not feel proud over the idea that death is very powerful and terrible. Okay, there is no doubt that some people call him to be mighty and dreadful. Okay, in reality, death is neither strong nor scary. The poet gives a sound argument in support of his ideas. Okay, death thinks that death kills certain persons who die. This is, however, not true. Death can destroy only their bodies, but it has no power over their souls. The soul is immortal. It never perishes. The poet John Donne challenges death and says that death cannot destroy him. Okay? Death is waste and insignificant. He says that rest and sleep, which resembles death closely, give pleasure to the people. Okay, death's duration is longer while their duration is shortest. Okay, sleep is for momentary. Okay, it is for short time. The poet therefore concludes that death must give people more enjoyment. The poet says that there is no need of considering death powerful and fearful. Lastly, those persons who are the greatest and noble person, okay, they are great and noble. Okay, they just die at a very young age. This gives rest to their bodies and sets their souls free from the prison house of body in order to attain eternal bliss.
Thus, the poet gives two arguments to prove that death is neither powerful nor dreadful. Death does not really kill. Death wrongly thinks that it kills. Okay? Donne feels almost sorry for death in its failure. This is expressed by the expression poor death. He calls death, what he calls death? Calls death poor. Why? Because it is miserable. The condition of death is very miserable. It's death thinks that it has killed many people, but it is not so. It can't kill anybody else. Okay, it can it can destroy only the bodies, only human bodies, but it had no power, no control over their soul. Soul is absolutely free from worldly fires. Death is not dreadful. Dying is just like rest and sleep, which give pleasure. Death is longer rest and longer sleep. The dying must be even more pleasant than resting or sleeping. Death frees the soul from the prison house of the body. Thus, the poet proves that death is neither dreadful nor mighty. Okay? Death has no power in itself. मृत्यु की अपनी कोई शक्ति नहीं है. ये बिल्कुल व्यर्थ है. ओके, वो मृत्यु अपने आप को समझती है कि शायद उसने इंसानों को मार दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इट इज़ नो पावर. इसकी अपनी कोई पावर नहीं है. ओके, इसलिए जो जॉन डन है वो कहता है कि जो केवल मृत्यु का जो डेथ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर पर है. ये सिर्फ मनुष्य के शरीर को ही खत्म कर सकती है. उसकी आत्मा पर इसका कोई अधिकार नहीं है. आत्मा अमर है, यह कभी भी नष्ट नहीं होती है. सो ही सेज दैट डेथ यू शुड नॉट फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, कि मृत्यु को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. ओके, in this octave session he talks about death, and he shows the condition of death. What is death? Death is neither dreadful nor mighty. Okay, death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. For thou art not so. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death, or yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, raised of their bones and souls delivery. Okay, now in this in these lines, what literary device we see? We just see alliteration. First of all, we just see alliteration in this in these lines. Okay, now come to this line. Much pleasure then from thee much more must flow. The repetition of the first consonantal word m. The repetition of the word m. Okay, so there is alliteration. We find a repetition of the word m. Much more must. Okay, so there is alliteration in this line. Okay, now and death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. And in the first line we see run on enjoyment. What is run on enjoyment? Actually, when the meaning of the first line does not complete in itself and it goes to the another line, it is called run on enjoyment. How? You just see, look at this line. Death, be not proud, though some have called thee what? mighty and dreadful. ये जो वर्ड इसका यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है. डेथ, यू शुड नॉट फील प्राउड ऑन योर सेल्फ. मृत्यु तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. दो सम हैव कॉल्ड दी, हालांकि कुछ लोग, जबकि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं क्या?
माइटी एंड ड्रेडफुल। ओके, तो ये जो लाइन का जो मीनिंग है, द मीनिंग गोज टू द अनदर लाइन एंड देन इट कंप्लीट्स इन इटसेल्फ। ये जो लाइन है ये यहाँ अगर कंप्लीट होती है नेक्स्ट लाइन में, व्हेन द फर्स्ट लाइन, द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन कंप्लीट्स गोज टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन इट कंप्लीट्स, इट इज़ कॉल्ड रन ऑन एंजॉयमेंट। ये जो पहली लाइन है इसका जो मीनिंग है वो सेकंड लाइन में आकर रुक रहा है, यहाँ आकर वो कंप्लीट हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड रन ऑन एंजॉयमेंट। डेथ, be not proud though some have called thee mighty and dreadful। ये यहाँ आकर कंप्लीट होता है mighty and dreadful नेक्स्ट लाइन में, so it is called run on enjoyment। okay, thou means you, thee you, thy your, art are, thinkst think, dost does। okay, ये मीनिंग आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। दी, यू, दाउ, यू, डोस्ट, डज, की, ओके, डेथ, बी नॉट प्राउड सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। तुम्हें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, सो द ऑक्टिव पार्ट कंप्लीट्स इन दिस वीडियो। ओके।